सब। मैं हूं आपका दोस्त नुमान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एसएस रिएक्शंस लाहौर। फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर थे जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी 10 ईयर्स ऑफ डिजिटल बांग्लादेश वीडियो पे रिएक्शन दूं, और इसके साथ साथ उन्होंने मुझसे एक और वीडियो पे रिएक्शन देने की डिमांड की थी जिसका टाइटल था बांग्लादेश द नेक्स्ट राइजिंग टाइगर। तो ये मेरी सेकंड वीडियो है बांग्लादेश पर, और ये उन्हीं सब्सक्राइबर की डिमांड पर है जिनकी डिमांड पर मैंने लास्ट वीडियो पे रिएक्शन दिया था। तो आई होप कि ये वीडियो भी इंग्लिश में हो, बांग्लादेशी लैंग्वेज में ना हो, ताकि मुझे समझ आ सके वीडियो, क्योंकि लैंग्वेज एक बहुत बड़ा इशू है। तो खैर देख लेते हैं वीडियो कि वीडियो किस बारे में है। Here we go. Land of natural wonders, colorful festivals, and endless possibilities, Bangladesh has a glorious history of resilience and valor. And the essence of this beautiful land can be found in the life and philosophy of one man, our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Almost 50 years ago, he liberated us from the shackles of oppression, taught us the true meaning of freedom, and envisioned for us a bright, prosperous future. Now, as the whole nation jubilantly celebrates the birth centenary of that greatest Bengali of all time, the future looks brighter than ever for Bangladesh under the prudent leadership of his daughter, Honorable Prime Minister Sheikh Hasina. Thanks to the government's enhanced priority on education, the last decade has seen the literacy rate jumping to 73%. Enrollment in primary schools has jumped to almost 100%. Besides, 14,000 community clinics have brought healthcare to the rural doorstep, rising the average lifespan of people to almost 73 years. Infant mortality has gone down to 31, while maternal mortality rate is now only 1.72 persons per thousand. For 4 consecutive years, Bangladesh has been at the top of the South Asian countries in ensuring gender equality as per the World Economic Forum ranking. The poverty rate has also decreased from around 40% in 2005 to 20.5% in 2019. In the fiscal year 2018-19, Bangladesh's GDP grew by 8.15%, which is one of the highest in the world. At the same time, per capita income has crossed $2,000 from $759 back in fiscal year 2008-9. Our exports have grown to almost 41 billion US dollars from 15 billion US dollars 10 years ago. Currently, Bangladesh is the second largest exporter of ready-made garments in the world. Meanwhile, our pharmaceuticals, leather products, food processing, and ICT industry are also making their mark at the global stage. Flow of remittance increased from $9.7 billion a decade ago to $16.5 billion US dollars in the fiscal year 2018-19. Flow of foreign direct investment has increased by almost 4 times in the last 10 years to reach $3.6 billion US dollars. Private sector investment has simultaneously increased by 5-folds in last 13 years, reaching almost 71 billion US dollars. Once dependent on food aid, Bangladesh has not only achieved food self-sufficiency, but also emerging as a food exporter. Currently, Bangladesh is the 4th largest producer of rice, 3rd largest producer of vegetables, and the 4th largest producer of freshwater fish in the world.
The power generation capacity has increased by 4.5 times to reach 22,329 megawatts. 94% people in the country now have access to electricity. More than 4,500 Union Digital Centers are bringing digital services to rural doorstep. The total number of mobile phone subscribers has crossed 161 million. Meanwhile, the number of internet users has increased to 96.2 million. After successfully achieving the Millennium Development Goals, Bangladesh is now working relentlessly to attain the Sustainable Development Goals. Bangladesh's unprecedented success is now being recognized by various global entities while earning the country accolades at the world stage. Back in 2015, Bangladesh became a lower middle-income country as per the World Bank classification. Goldman Sachs has identified Bangladesh as one of the next 11 countries that has the potential to become one of the world's largest economies in the 21st century. According to HSBC, Bangladesh is likely to become the 26th largest economy in the world by 2030. Meanwhile, PricewaterhouseCoopers projected that Bangladesh has the potential to become the world's 23rd largest economy by 2050. To boost up such huge economic progress, the government has also initiated various mega infrastructure projects. The country's longest bridge over the Podda River, Dhaka Metro Rail, Pyra Deep Seaport, Bangabandhu Space Satellite, and the country's first nuclear power plant in Rupur. These are just few examples of such mega undertakings. 100 special economic zones will be established across the country in the next 15 years to produce goods and services worth $40 billion and to create 10 million jobs. Meanwhile, 28 high-tech parks will be constructed to bring ICT export to $5 billion by the year 2021, while creating 2 million jobs. To bring all the modern amenities to the rural people, the government is also implementing the gigantic scheme My Village, My Town, a major promise of its latest election manifesto. Bangladesh has a young, energetic population with 34% of its people aged 15 and below, while more than 65% is of working age. Cashing in on that demographic dividend, Bangladesh now aspires to become a major player in the upcoming fourth industrial revolution. To make this country ready for that transformation, the government has put special emphasis on quality education, technology, digitization, youth, and decent job creation in its latest budget, as it is determined to create jobs for 30 million people by the year 2030. Despite all that has been achieved, Bangladesh is not resting. In line with the dreams of our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, we are aiming to become a prosperous, developed nation and one of the top 20 economies in the world by 2041. Come, join us in our journey as we march beyond the dreams to emerge as the world's next rising tiger. Okay guys, ये थी वीडियो और वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में काफ़ी कुछ नया जानने को मिला। बावजूद इसके कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें ऐसी थी जो कि पिछली वीडियो में भी अवेलेबल थी, जैसे कि बांग्लादेश का लॉन्गेस्ट ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा ढाका मेट्रो प्रोजेक्ट है और एक डीप सी पोर्ट है, उसका भी काम चल रहा है। इसके अलावा एक बंगाबंधु स्पेस सैटेलाइट मिशन था, बांग्लादेश का फर्स्ट इलेक्ट्रिकल न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो भी इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है।
इसके अलावा काफ़ी नई इन्फॉर्मेशन इसमें जानने को मिली, जैसा कि मुझे मेरे इल्म में नहीं था कि बांग्लादेश वर्ल्ड में 2nd नंबर पर है रेडीमेड गारमेंट्स की एक्सपोर्ट्स में। और इसके अलावा फार्मास्यूटिकल, लेदर और वेजिटेबल्स में भी काफ़ी हाई रैंक रखता है बांग्लादेश पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करने में। जीडीपी का तो जैसे मैंने जिक्र किया कि इसमें उन्होंने बताया कि एक अच्छा खासा ग्रोथ बांग्लादेश ने गेन की है। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स का इन्होंने जिक्र किया कि एक्सपोर्ट्स भी बहुत बढ़ी हैं बांग्लादेश देश की पिछले कुछ अरसे में। इसके अलावा कुछ कम्प्लीमेंट थे जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ के लीडर्स ने बांग्लादेश को दिए। नो डाउट बांग्लादेश दोनों कंट्रीज़ इंडिया और पाकिस्तान से ज़्यादा अपनी इकोनॉमी, अपनी ग्रोथ पर काम कर रहा है। मुझे ऐसा लगा वीडियो देखकर। हम लोग एक दूसरे के बारे में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं। हम इंडिया पाकिस्तान वाले एक दूसरे को हराने में लगे रहते हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ने में लगे रहते हैं, और इस चक्कर में कंट्री की जो प्रोग्रेस है वो कहीं बैक एंड पे चली जाती है। बांग्लादेश मेरे ख्याल से इस मामले में लकी है कि उनकी किसी से डिफेंस सेक्टर में कोई राइवलरी नहीं है। इस वजह से उनका सारा फोकस अपने कंट्री के लोगों की प्रॉस्पेरिटी पर है। इसके अलावा काफ़ी सारे सेक्टर ऐसे थे जिसमें हमें सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट देखने को मिला, जैसे कि हेल्थ एंड एजुकेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट थी, काफ़ी ग्रोथ हुई बांग्लादेश की। इसके अलावा 10 मिलियन जॉब आने वाले टाइम में उन्होंने प्रॉमिस किए हैं अपने सिटीजन्स के लिए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अच्छे से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में बांग्लादेश की ग्रोथ कहाँ तक जाने वाली है। और वो लोग एम कर रहे हैं 2041 तक एक पूरी तरीके से डेवलप्ड नेशन बनने के लिए। अच्छी बात है अपनी कंट्री के लोगों के लिए, अपने आवाम के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू करना। इसके अलावा इसमें इन्होंने इंटरनेट का यूजेस बताया कि इंटरनेट के यूज़र्स काफ़ी बढ़े हैं। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, वहाँ से जाकर आप इन चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप लोग मेरा रिएक्शन आपको कैसा लगा। इसके अलावा इंस्टा पर मुझे फॉलो करके DM करके आप मुझे बता सकते हैं कि किन वीडियोज़ पर आप मेरा रिएक्शन देखना चाहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट किसी वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।